Hi guys, here is a short video for you all. This can motivate you a little bit. I am making this video deliberately for all the hustlers there. Those who can understand कि भाई मेहनत करने से everything is going to be possible. Now, here is a story of one of my students, Smith. Smith joined us in Mumbai for CAT coaching. बाद में कोरोना आया and then we moved to online. Now, Smith gave CAT, got round about 90 percentile. उसमें potential था, वो अच्छा कर सकता था, but because of some change in the pattern and थोड़ा सा पेपर टफ होने की वजह से थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन का गड़बड़ हो गया एंड ही गॉट इट टू सम 90-91 परसेंटाइल. नाउ दैट्स नॉट द पॉइंट. आई थिंक 93 मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज व्हेन आई आस्क्ड हिम कि यार स्मिथ और एक अटेम्प्ट दे दे कैट को, तो कर सकता है, तेरा प्रोफाइल अच्छा है, तेरे में पोटेंशियल है, तेरा एटीट्यूड भी अच्छा है, क्यों ना और एक अटेम्प्ट दिया जाए और कैट में अच्छा करा जाए, नेक्स्ट ईयर आईएम्स टारगेट करे जाए. एंड इज लाइक नहीं सर, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अभी मुझ में उतना इंटरेस्ट है एप्टीट्यूड देने का. आई थिंक मैं अच्छा कर लूंगा बी स्कूल में, मैं अंदर जाके हसल करेगा एंड मैं फोड़ू. और उसके वो जो वर्ड्स थे वो आज सही हुए, बिकॉज लास्ट नाइट ही मैसेज मी सेइंग दैट he is one of the national winner in one of the case study competition जहां पे around about 450 plus student participated from 50 different B schools in the country. And I was amazingly happy because यार ये बंदे ने मुझे कहा था कि मैं अंदर जाके फोड़ूंगा. This is the beginning. I told him, dude, this is just the beginning and you will have to do these things a lot eventually, because ये चीजें बहुत मैटर करती है. भले आपका प्रोफाइल कितना भी बेकार हो, भले यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, मे बी यू आर इन योर 60s and 70s, but winning such competitions, having your profile which has these things on your resume, भाई ये चीजें तुम्हारी फाइनल प्लेसमेंट में 5 स्टार लगा देती है, because then you have a great chance to get recruited by the top-notch recruiters on the campus. You getting my point? Along with your academic record in the first year of MBA. So guys, always remember, MBA is all about hustling. MBA is all about working hard. I feel really sad, जब मैं कुछ स्टूडेंट्स से बात करता हूँ, मतलब definitely not my students, जब मैं किसी स्टूडेंट्स को कहते हुए सुनता हूँ, या फिर मैं कभी किसी मेंटर को कहते हुए सुनता हूँ कि भाई MBA is all about पार्टी करो एंड सोलमेट ढूंढो और ये करो वो करो, I feel this is all fuck shit, because ये अभी तो मैटर नहीं करता है. पता नहीं 10 साल पुराने अगर किसी ने MBA करा होगा, अगर वो बोल रहा होगा तो 10 साल 15 साल पहले ऐसा होता होगा. बट मेरे ख्याल से आज कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है, इतना स्टिफ हो चुका है कि ठीक है, यू वांट टू हैव फन, यू कैन हैव फन, बट एट द सेम टाइम यू गॉट टू हसल. If you don't work hard, during your MBA का 2 साल, what, it's not even actually 2 साल, तुम्हारा 1-1.25 साल बहुत मैटर करता है. तुम्हारा पहला साल MBA का, फिर तुम्हारा 2 महीना तुम्हारा समर इंटर्नशिप का, और आने के बाद तुम्हारा 2 महीना. सो राउंड अबाउट अगर आप देखोगे 16 महीने का ये गेम होता है. सो इफ यू प्ले वेरी वेल इन दिस गेम गाइज, यू कैन गो प्लेसेस. मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो एक कॉलेज लाइक केजी सोमा में जाके 29 लाख का प्लेसमेंट लिया है. आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग इनटू go instead of management and doing amazingly good, like 16-17 lakhs का पैकेज लिया है. I have seen average student getting into IM, ABC and banking in package of round about 30 lakh plus, right? तो ये चेंजेस होते हैं. खाली एंट्रेंस में अच्छा कर लेना और MBA में जाके मेहनत ना करना will not help you guys to succeed eventually. And trust me, MBA nowadays is all about hustling. भले आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं हो, या फिर भले आप academically sound नहीं हो, but if you have that attitude, if you have that fire, and if you really want to change your life, then guys, you get into any B school. I mean any, मतलब definitely top 30 में I'm talking about. अगर मैं top 16 से लेके 30 के बीच में अगर मैं बात करूँ, वो 15 school, you get into those B schools and trust me, you can change your life. और तुमको ऐसी चीजें मिलेंगी that you can't even believe. I have seen people from KJ, I have seen people from tier 2 B school, I have seen average students from tier 1 B school getting into companies like JP Morgan, Goldman Sachs, getting into companies like McKinsey, BCG, Bain and Company, and they were really flabbergasted because they thought कि यार हमें लगा नहीं था कि भाई हम इतने बड़े कंपनीज में जाएंगे, बट ठीक है, मैं MBA में हसल मारा, बहुत मेहनत किया and we got into it. So guys, MBA is not about partying, and it's not about finding your soulmate. It's all about hustling for those next 2 years. And लोग कहते हैं कि एक दिन हमारा भी आएगा. I would say कि तुम्हारा एक दिन आएगा. आप ये मत बोलो, तुम ये बोलो कि भाई हमारा भी एक decade आएगा, wherein you will be rocking 10 years, 20 years in the corporate world, or you will be doing amazingly good in your life. So guys, remember, if you're watching this video and if you're doing an MBA, maybe first year or second year, make sure that you hustle a lot. You work 150% harder than the other peers of yours in that particular B school, because final placement में लेकर के ब्रांड और सोलमेट के नाम नहीं पूछे जाते हैं. फाइनल प्लेसमेंट में आपका एटीट्यूड और आपके कंसेप्ट चेक करे जाते हैं काके. सो वर्क योर एस ऑफ, वर्क हार्ड इन द बी स्कूल. Once your CAT is done, once your ZAT is done, once you get into the B school, it's all about you, your attitude, how much you hustle, and how much you put in hard work. That's it. So guys,
those who, if you feel that you're an average guy, if you don't get into an IIMs, then it's going to be end of life. Bullshit. It's not going to be an end of life. You get into any B school, if you study hard, you can do amazingly good in your life. Even if you get into top-notch B school, 2 साल मस्ती करोगे, पार्टियां करोगे, अगर कुछ मेहनत नहीं करोगे, probably you will land up in the bottom of that entire janta, which don't get placed very well. So guys, it's all about the perspective, it's all about attitude, and it's all about hustling. So all the hustlers out there in the world, if you have a tough time right now, don't worry, you will be having a shining period very soon. Keep hustling, keep working hard. That's it from my side. Thank you so much for watching this video. Do subscribe for real motivation. Bye-bye.